नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन एक ऐतिहासिक सत्र के तौर पे से जाना जाएगा क्योंकि सेंसेक्स ने पहली बार आज 31,000 का स्तर पार किया और निफ्टी भी 9600 के स्तर के बेहद करीब कामकाज करते हुए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जोरदार तेजी देखी जा रही है और बैंक निफ्टी जो कि अपने रिकॉर्ड स्तरों पर अब पहुंच चुका है, एक अच्छी तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो क्रॉस द बोर्ड मार्केट बाइंग है। हालांकि सेंसेक्स ने 31,000 का लेवल पार किया, उसके ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन अभी भी बाजार में जो तेजी है वो जारी है। 200 अंकों से ज्यादा का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी भी करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। मेजरली मेटल इंडेक्स जो है वो आज के बाजार को ड्राइव कर रहा है और करीब करीब 2.5 से 3% की तेजी इस पूरे इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और मेटल इंडेक्स में बात करें तो टाटा स्टील जैसे शेयर जो कि 5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए, हिंडाल्को भी रफली 5% के आसपास की तेजी के साथ अभी कामकाज कर रहा है। तो एक जोरदार तेजी और इतिहास आज के दिन बनता हुआ दिखाई पड़ा। 31,000 के स्तरों को सेंसेक्स ने पार किया है। इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट के 3 साल पूरे हुए और मार्केट ने पूरी तरह से उसे सैल्यूट भी किया है क्योंकि आज दिन बड़ा है और कई सारे जो खबरें हैं वो लगातार बनी हुई हैं और बाजार में भी काफ़ी इवेंट देखने को मिला। तो इसीलिए आज हम अपने कॉर्पोरेट डार में भी कई सारे मैनेजमेंट लेकर मौजूद हैं। हमारे साथ 3 मैनेजमेंट मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जो कि मिस्टर बी त्यागराजन, ज्वाइंट MD ब्लू स्टार के। मिस्टर त्यागराजन, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये सीज़न जो है ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए भी और एक अच्छी डिमांड देखी भी गई है इस पूरे सीज़न में गर्मी की वजह से। गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो आंकड़े रहे हैं, अगर इसको हम आगे चल के नंबर्स में देखें तो कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं जो गर्मी रही है इसकी वजह से या फिर जिस पूरे समर सीजन में, और क्या ये पिछले कुछ सीजन से बेहतर रही है और ये मान सकते हैं कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा? Good afternoon. Thank you for speaking to me. The season has been good. It is not as great as last year, but at the same time, you can't compare it with last year. Last year was a golden summer. For example, we grew by over 50% in volume terms in many locations. At this point of our time, I think the summer in most part of the country is at its peak. And we should be targeting something like 30% growth this summer. सर, क्योंकि पिछली बार के समर से कंपैरिजन भले ही नहीं हो पाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट कंपनी ने इस बार ही लॉन्च किए हैं और जिस तरह के इनोवेशन कंपनी अब लगातार कर रही है अपने प्रोडक्ट लाइन को लेकर, ये मान सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड जो मार्जिन सिचुएशन है थोड़ी बेहतर होगी एटलीस्ट पिछले साल के कंपैरिजन में, या सीक्वेंशियल आधार पर देखें तो भी? Margin has been stable till now at least. Post GST we have to wait and see. As of now, there is no concern in terms of margins at all. In 1 or 2 product categories we may have to adjust the prices. So far it has gone on well. Now in the month of June, in view of the GST, there are hesitations among the trade. How do I lift the material? If I am left out with the stock, what will happen? So as you are aware, the transition provisions are going to be further relaxed on June 3rd. There is a meeting in which the GST Council will decide what other measures they can take to allay the fears of the trade in this particular context. Our assurance to the trade is not to worry about, keep selling the product, and we will figure out a solution how to transit to GST. If the stocks are left out, how that should be treated. So there will be some minor price corrections that may have to be done. But on the whole, at this point of a time, I do not see any big erosion in terms of margins. But as you know, in the GST regime, air conditioners are fitted at 28%. That is roughly 2.5% higher than the current rate. So therefore, we need to figure out how much we can pass on to the consumer, how much we can absorb. It depends on the supply chain efficiency. So there is a window that is available from 1st of July till 31st of December before the new energy label comes into picture. We will take a call in July first week or June last week. जी,
एक चीज़ जो क्रूशल कंपनी के साथ रही सर, क्योंकि मेटल प्राइसेस ने एक नॉर्थवर्ड ट्रेंड दिखाया है, तो क्या इम्पैक्ट कुछ मार्जिन्स के ऊपर आया है इसकी वजह से? और दूसरी चीज़, समर से पहले प्राइस हाइक भी इस सेक्टर के अंदर हुआ है, तो क्या प्राइस हाइक से कुछ रिलीफ आया? गोइंग फॉरवर्ड अब क्या फर्दर प्राइस चेंजेस एटलीस्ट जीएसटी के बाद हम मान सकते हैं? For the summer season, we procured the material, the raw material components all got procured somewhere in the third quarter itself, or January, February. There had not been a very major impact at that point of a time on commodities. The products that are getting sold in the month of May, June, July, there will be an impact on the higher commodity prices. But the commodity prices have become favorable at this point of a time. So you don't operate in a market based on month-to-month commodity prices. You take an overall call, like I may be losing some money at this point of a time, but I will gain at some point of a time. And I think post GST, there may be an impact in terms of say 1% or 100 basis points, but it should get made up over the efficiency that is to be built. So our overall guidance is the margins for FY18 will remain same as FY17, a whole year put together. At least that is our goal, and we will meet that goal. That's what I'm attempting to do. Okay. मिस्टर त्यागराजन, जब भी कभी एसीज की बात होती है या कूलिंग सॉल्यूशंस की बात होती है, हमेशा ब्लू स्टार का ही नाम सामने आता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी चेंज किए हैं, जैसे कि वाटर प्यूरीफायर्स, वाटर कूलर्स, एयर प्यूरीफायर्स जैसे कई प्रोडक्ट भी शामिल किए हैं। इनकी डिमांड अभी कैसी आ रही है? Water purifier has been a consistent market demand growth that prevails. Say for example, it's a CA 25% CAGR product it is. Our decision to enter water purifier is basically because of the fact that the market will continue to grow, and second is it is a growing middle class centric product. All our products are meant for high income group, and we are upper middle class. We wanted the entry level products to come in. So there are two products that got added. One is water purifier, other is air cooler. Now whether Blue Star will be known for water purifier, yes, in a couple of years time we must be. We are just 6 months ago we have launched the product. There is great level of acceptance, and we are growing the market. It is an investment phase. As far as air coolers is concerned, again, it is a middle income group product. We have done well in this particular season. I think our market share has already reached somewhere around 5% in the very first year. In about couple of years time, we should be crossing 10% market share figure. And the whether we will be remembered for these products, the time will tell. Actually, we have to do everything right there in terms of product, in terms of service, in terms of our own share of market and the presence. We will do that. जी सर, आपने कई प्रेस्टिजियस कंपनी ने कई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो हुआ, पार्लियामेंट हाउस हुआ, इनकी कूलिंग सॉल्यूशंस को लेके आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। क्या कुछ इसी तरह के प्रोजेक्ट्स और कंपनी जिन पे कामकाज कर रही है, या कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिन पे कंपनी बोली लगा रही है, बिड कर रही हो? Indeed, so if you take in India, in any commercial district, every third building Blue Stars should have an interest, either in terms of air conditioning or in terms of water cooler or in terms of a refrigeration product. So we have been market leaders. We have been around for more than 7 decades. We take pride in the fact that quite a few prestigious buildings or facilities we have done so. Say for example, Mumbai Airport. And there are many projects that are on the anvil. But as you know, the commercial construction has been slow. It has not opened up in a big way. There are some signs that the market will revive. That is connected with many things actually.
GST on the buildings. The next thing is the Real Estate Regulatory Authority Act. Actually, there are certain regulations. The builders, developers have to readjust themselves. And most important fact is the commercial corporate sector will have to consume office spaces, which is directly related to employment generation. For example, each employee recruited by organized sector consumes at least 50 square feet of air conditioned space. If 1 lakh people are employed, 50 lakh square feet should get consumed in terms of air conditioning. Right now, IT is not a sector which is looking very great in terms of employment generation or expansion. But we are a long-term player. We have to wait and see. But you can be rest assured, if there are prestigious buildings, more than a third of that Blue Star will be doing it. जी, सही कहा आपने सर, और आगे भी यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक सवाल आपके इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर सर, क्योंकि इंटरनेशनल ऑपरेशंस में मिडिल ईस्ट एक मेजर कंपोजिट करता है आपके रेवेन्यूज़ का, और क्रूड के जो रेवेन्यूज़ हैं या क्रूड बेस्ड जितनी इकोनॉमीज़ हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रही हैं। इसका कोई इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर? Not so for SE. We are a recent player there. We have lot of grounds to cover. So from our small base, for us to achieve something like 20% growth every year is easily possible. And our strategy is very clear. We are going to be selective in terms of markets in Middle East or SAARC countries or North Africa. We are taking small steps in order to grow our market share. So in that context, I don't think these things are going to be creating a problem like an oil price or geopolitical issues. Our growth ambitions there are somewhat modest given the small base. जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, और हर बार की तरह आपसे बातचीत करके एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं ये सीज़न आपके लिए काफ़ी बेहतर रहे, और जो उम्मीद आप लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी सेल्स आने वाले समय में हम देखें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय एक बार फिर से देने के लिए। अब बातचीत करते हैं आशीष से। आशीष महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं ब्लू स्टार पे बातचीत करने के लिए, उनका व्यू क्या कहता है। आशीष, हम ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑपरेशंस में क्रूड का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक ऑपरेशंस काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कंपनी लगातार कामकाज कर भी रही है। आप क्या व्यू रखते हैं इस कंपनी को लेकर? देखिए, जो 2-3 चीजें पॉजिटिव हैं कंपनी के लिए यदि उनके नजर आने तो इस बार चूंकि गर्मियों का सीजन जल्दी आ गया तो उसका बेनिफिट पूरी एसी की मैन्युफैक्चर कंपनीज को मिल रहा है। तो ब्लू स्टार की भी जो ग्रोथ है, इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री में की ग्रोथ जो 25% की दर से ग्रोथ हो रही है, ब्लू स्टार इनफैक्ट 30% की दर से ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल मॉनसून का भी इस बार प्रिडिक्शन है, तो एक कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है, तो जिसके कारण से जो एफएमसीजी और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी भी सेल में हमने अच्छा खासा इजाफा देखा, तो ब्लू स्टार को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरा जो इनका एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जो नए प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किए हैं, जैसे वाटर प्यूरिफायर है या एयर कूलर है या एयर प्यूरिफायर जैसे सेगमेंट्स हैं, और रेफ्रिजरेशन में भी 2 नए सेगमेंट जो लॉन्च किए हैं, तो उन सारे सेगमेंट्स के कारण से भी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ 20 से 25% होगी, पर ब्लू स्टार की ग्रोथ अगले 2 सालों में करीब 30% की दर से ये ग्रोथ करता रहेगा। क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं आशीष इसमें? जी, मेरा इस कंपनी के लिए जो यदि 1 साल की होल्डिंग का टारगेट है तो मेरा इसमें टारगेट करीब 800 रुपये का रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय हमें देने के लिए आशीष, और ब्लू स्टार में बातचीत करने के लिए। तो आपको रिकमेंडेशन भी दी गई और बाकी ब्रोकर्स की कॉल भी आप देख रहे हैं। स्पार्क कैपिटल मानता है कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, अच्छे अपसाइड खुलते दिखाई पड़ सकते हैं। केआर चौकसी और एमके शेयर्स भी, केआर चौकसी का करीब बाय का टारगेट है, लेकिन एमके में करीब बिकवाली की राय उन्होंने दी है। तो मिली जुली राय, लेकिन आशीष का मानना है कि यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड काफ़ी है, आप निवेश कर सकते हैं।